अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ का रुकू नंबर 13 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यहदि लिल्लज़ीन यरिसूनल अर्द मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशाअु असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम वनतबअु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। तिलकल क़ुरा नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहदिन व इन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिक़ीन। ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين। وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रुकू को 3 से 4 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा।